Hello everyone, welcome back to our series with top industry experts in the diagnostic sector. Today we have the pleasure and privilege of having Dr. Charu Kohli with us. Dr. Charu has over 20 years of experience in the diagnostic sector, and she has been running her own lab and radiology center for the past 20 years. Very few people know that she started from the corner of her house, and today her center runs over 10,000 tests in a month. So it is our very great pleasure today to be in conversation with Dr. Charu and understand some of the common trends which we are seeing in the diagnostic space. Hello, Dr. Charu. It is such a pleasure and privilege to have you with us today. Thank you so much for taking time out for this interview. It's such a pleasure, Samya. I really enjoy it when you come over for these little chats. Thank you so much, ma'am. So, ma'am, I had discussed with you that we are doing this series of interviews with industry experts, and we really want to understand from you, since you are a veteran in the diagnostic space. I know, ma'am, you have over 20 years of experience. So, wanted to really understand from you, what has the transition in especially the lab space been? Like we know, ma'am, earlier all the tests were done in the manual way. Then we had something called the semi-automatic machines coming into the picture. And now today we know there are fully automatic machines, which essentially a lot of our labs are using, including yours, ma'am. So just wanted to understand how that transition has really meant for the human resource part in a lab, and how has it really impacted, say, the number of samples that you're testing in a day? ओके, सामिया से जब हमने शुरू किया था तो बहुत छोटी सी लैब थी. 2-4 सैंपल होते थे रोज के. कभी एक टेक्नीशियन से बड़े आराम से काम हो जाता था. फिर काम स्लोली बढ़ता गया, तो हमने 2 टेक्नीशियन रखे, फिर 5 से 6 हो गए. मैनुअल मेथड से हम सेमी ऑटोमेटिक पे आ गए. उसके साथ प्रोग्रेस करते गए तो हम लोग फुली ऑटोमेशन पे आ गए. एंड फुली ऑटोमेशन के बाद अब हमारा सारा कुछ कंप्यूटराइज है. तो हमारा मैनुअल इंटरवेंशन टेस्ट लगाने का है, बाकी सब कुछ कंप्यूटर्स करते हैं. रिपोर्ट जनरेशन तक सिर्फ प्रिंट आउट देने की बात रह जाती है. अभी तो खैर लैब में 20-25 लोग काम करते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि टाइम के साथ लैब में काम करने वाले कम और सैम्पल कलेक्शन वाले ज़्यादा होंगे. ओके. सैम्पल कलेक्शन करने वालों का काम कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज वो इसेंशियली मैनुअल है एंड उसके ऊपर बहुत स्किल की ज़रूरत है. अनलेस यू हैव द स्किल ऑफ बीइंग अ गुड फ्लेबोटमिस्ट, और तुम सैंपल बिल्कुल पेनलेसली बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले सकते हो, तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा. एब्सोल्युटली. मैम, अब देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े लैब्स हैं उनमें बहुत सारे फ्लेबोटमिस्ट हायर होते हैं. होम सैंपल के लिए हायरिंग होती है. हाउएवर लैब टेक्नीशियंस प्योरली जो सिर्फ लैब में बैठ के टेस्टिंग करें, वो नंबर्स हमने देखा है कि काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज nobody can replace sample collection. Okay, no computer, no robot can replace that. And the skill a good phlebotomist has, उसका हाथ इतना सॉफ्टली जाना चाहिए कि पर्सन को पता भी नहीं चलता है कि सुई कब लगी और कब निकली. उस बात को कभी कोई कंप्यूटर नहीं रिप्लेस कर सकता. राइट. कुछ भी कर लो, बाकी सब कुछ क्योंकि कंप्यूटराइज हो गया है, ऑटोमेट हो गया है, उन पोजीशंस पे जगह कम है. लेट्स से कोई बड़ी लैब है जो 10,000 सैंपल रोज के प्रोसेस करती है, उसमें लैब के अंदर तो सिर्फ 20 लोग होते हैं. सैंपल कलेक्शन करने के लिए 100-200 लोग होते हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैम. एब्सोल्युटली. तो मैम, मगर ये समझना चाहूँगी मैं आपसे कि बहुत दफ़े जब हमारे स्टूडेंट्स जो लैब टेक्नीशियंस का कोर्स करते हैं, वो कहते हैं कि हमने लैब टेक्नीशियन का कोर्स करा, हम फ्लेबोटमी में क्यों जाएं, हम फ्लेबोटमिस्ट क्यों बने, हमारा इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या करियर ग्रोथ होगा. तो मैम, आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखो, पहले दिन ही तुम सबसे ऊंची सीढ़ी तो नहीं क्लाइंब कर सकते. यू हैव टू डू द स्टेप्स अलोंग द वे, एंड बीइंग अ गुड फ्लेबोटमिस्ट इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ लैब. If a person cannot do a phlebotomy properly, उसकी लैब में कोई जगह नहीं है.
अच्छा, रियली मैम? हाँ, दिस इज बिकॉज तुम सैंपल कैसे ले रहे हो, तुम्हें उसके बारे में क्या नॉलेज है, तुमने किसका सैंपल लिया, पेशेंट को देखा नहीं देखा, पेशेंट की क्या फाइंडिंग्स तुम्हें लगी, क्या था. सो मेनी इनपुट्स यू कैन गिव मी जो मुझे नहीं पता है. मैं हर पेशेंट के लिए तो जाके सैंपल पे नहीं खड़ी होती हूँ कि तुमने किसका लिया, क्या किया. एंड ऑफ द डे तुम ही मेरे आईज और वो सब ईयर्स हो. तुम ही मुझे बताओगे मैम इसका स्किन में कोई प्रॉब्लम थी, स्किन में एलर्जी थी. फ्लेबोटमिस्ट हो, गो एंड इवैल्यूएट कि स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग थी, रैशेस थे, आईज में कुछ गड़बड़ थी, जॉन्डिस थी आईज में, हम और क्या देखेंगे. राइट. और सैंपल तुमने अच्छे से लिया, तुम्हारा फीडबैक अच्छा होगा, तुम तुम्हारे को उसके भी बेनिफिट्स मिलेंगे. किसी भी अच्छी लैब में इन सब बातों की बात बेनिफिट्स तो होते ही हैं. जब अच्छा फ्लेबोटमिस्ट होगा उसमें से हम चुनते हैं कि कौन लैब में जाने के लायक है. अच्छा. सो अगर 10 पर्सन्स हैं फ्लेबोटमी करने वाले, उनमें से 2 को हम लैब में भेजेंगे जो हमें लगता है कि अच्छा परफॉर्म करें और रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, who have the acumen, the clinical acumen to be able to diagnose and to understand the importance of the test that they are conducting. आपने क्या काम करा, किस लिए करा, और इसमें आगे क्या इन्फ्लुएंस है, ताकि जो बंदे ने पेशेंट देखा अगर वही जाकर के बाद में लैब से मुझे वापस बताएगा कि मैम इसको मैंने सुबह देखा था, इसकी आईज येलो थी और इसके ब्लड में जॉन्डिस आ रहा है, बिलिरुबिन इज हाई, वी नो कि इसको रिएक्ट करने की बात है, इसको फोन करके बताने की बात है कि आपको हेपेटाइटिस है या कुछ भी है. राइट, अंडरस्टूड. एब्सोल्युटली. सो आप कह रही हैं कि द क्लिनिकल कोरिलेशन टू द टेस्ट इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वेरी इंटरेस्टिंग. While I understand, मैम, आपने ये बताया कि phlebotomist definitely should aspire to become a lab technician. I would really like to understand from you, मैम, कि for example ऐसी क्या traits होती हैं जो आप देखती हैं कि somebody who's say been hired, a freshers for example, जो अभी बिल्कुल पास आउट हुए हैं अपनी डिप्लोमा या डिग्री करके, उनको अगर आप हायर करती हैं as a phlebotomist, so how do you see the career path for them? See, phlebotomists these days get excellent salaries. It's almost like sky being the limit. They earn up to 40,000, 50,000 in a month. They have that capacity, provided they are good at their job. You're right, ma'am. Whatever work you do, तुम अगर उसको truthfulness और honesty से करोगे तो वो अच्छा ही होगा. So same thing is with sample collection. एंड अगर ये अटेंटिव है, ऑब्जर्वेंट है, अच्छे से सैंपल ले रहे हैं, इनको बेसिक चीज़ें, कोडिंग ऑफ वायल्स, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पता है, वेल ग्रूम्ड है, व्हाई विल आई नॉट बी हैप्पी टू मूव देम टू द लैब. इफ आई सी थोड़ा बहुत इन लोगों को कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, राइट, इन टुडेज world. The communication skills should be good. You should be empathetic to the patient, बिल्कुल politely deal करना, and with kindness. The kindness should be from your heart, not from ऊपर का ही, because your general demeanor either can put off a patient or it can make the person keep coming back for more. Empathy, basically empathy. High levels of empathy. Absolutely, ma'am, I completely agree with you. Ma'am, I have another question. I know you also in your diagnostic center run imaging services. So I also wanted to understand that what is the career growth path for a radiology technician? सामिया, आजकल तो रेडियोलॉजी में आग लग गई है. Really, especially जहाँ पे टेक्नीशियंस की बात है, चाहे वो फ्लेबोटमिस्ट हो या इमेजिंग टेक्नीशियंस, कोई लिमिट नहीं है. हाँ जी. They come in as fresh graduates and by the end of it all 10,000 की सैलरी पे आ करके 50,000 तक ले जाते हैं. Very nice. But उनका इंटरेस्ट होना चाहिए. They should be dedicated and willing to learn. Right. So ma'am, imaging technician जैसे आपके पास आते हैं, so how do they progress? Like for example, एक्सरे पे पहले आते हैं, फिर उसके बाद when हमारे यहाँ तो आते हैं तो फिर पहले तो इनको एक्सरे पे रखा जाता है, रूटीन एक्सरेज पर. हाँ जी मैम. फिर इनको स्पेशल्स पे अलाउ करते हैं.
फिर then we have a third step which is the more specialized investigations. उन पे allow करते हैं. After that they are allowed to be on the field sometimes, and finally CT scan and then MRI. मैम एक कॉमन सवाल है बच्चों का जब वो इंटर्नशिप पे जाते हैं कि हमें पहले दिन से आप लैब में क्यों नहीं भेजते, उसका क्या जवाब है मैम? आप पहले दिन से लैब में जाके क्या करोगे? जब तक आपको कुछ मालूम ही नहीं है सिर पैर मशीन के बारे में, आप क्या करने वाले हो? पहले आपको फेमिलराइज होना है विद द प्रोसीजर्स. जिस भी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में आप काम कर रहे हो वहाँ पे काम कैसे होता है, पेशेंट आता है कैसे डील करना है, उसका फॉर्म क्या है, आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए, तब आप जाके लैब में करोगे. आप स्ट्रेट अवे जाकर के तो हेलीकॉप्टर नहीं चला सकते ना. एवरीथिंग नीड्स ट्रेनिंग and practice. Only after that can you graduate. The machines are so expensive and they are so specialized that you have to be trained properly for them. आपने किसी का ब्लड ग्रुप गलत कर दिया, हम कहाँ से देख पाएंगे उसको? राइट. बेसिकली आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से प्रॉपर होनी चाहिए, तब आपको लैब में भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. राइट. तो मैम अगर जैसे बच्चे आपके पास आते होंगे इंटर्नशिप के लिए, तो मैम उस केस में आप लोगों ने कोई एक फ्लो बनाया हुआ होता है कि इस फ्लो के थ्रू बच्चे अपनी लर्निंग करें? एब्सोल्युटली. जब आते हैं सो वी इंट्रोड्यूस देम टू द सेंटर, which department is where, because they should be familiar with the workflow and for the premises के क्या करना है. Next thing they have to be familiar with the procedure कि patient आया, रिसेप्शन पे आया, उसका फॉर्म जनरेट हुआ, कहाँ से फॉर्म है, टेस्ट कहाँ से देखने हैं. Then we start telling them about basic procedures. कौन से वायल में ब्लड कैसे जाता है, कौन सा पहले लेना है, सैंपल कौन सा बाद में लेना है, क्या तैयारी करके आना है पेशेंट को. फिर सैंपल लेने के लिए अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें हैंडल कैसे करोगे, सैंपल को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, तुमने इस रूम में कलेक्ट करा, लैब तक पहुंचने में उसको लेके कैसे जा रहे हो. एंड अगर जो वेस्ट जनरेट कर रहे हो, तुमने सिरिंज निकाली या वैक्यूटेनर की नीडल ली, उसको तुमने डिस्पोज ऑफ कैसे किया, डिस्पोजल इन द बिन, इन द बैग्स, विच कलर बैग गोज फॉर व्हाट, सो उसके बाद ही उनको जब फिर वो एक बार फ्लेबोटमिस्ट अच्छे बन जाते हैं, फिर हम उनको लैब से इंट्रोड्यूस करते हैं. सो जब लैब में जाते हैं समय उनको ये मालूम होना चाहिए मशीन में अगर कुछ क्वालिटी कैसे एनालाइज करनी है, कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चार्ट्स होते हैं, उनको वो देखना पड़ता है. उनको पैथोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ती है या बायोकेमिस्ट से बात करनी पड़ती है कि मैम आज की रीडिंग्स ऐसे हैं, तो वो बताएंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, इसमें क्या इम्प्रूव करना है, क्या गड़बड़ है. हाँ, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है और हर हफ्ते इनको जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं वो ट्रेनिंग्स देते हैं. हर हफ्ते इनको ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, तब जाकर के ये अच्छे सीनियर लैब टेक्नीशियन बन पाएंगे. वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. मैम basically the various roles in a lab, if we are to discuss that, commonly people think कि लैब में दो ही रोल्स हैं. एक वो जो सैम्पल कलेक्शन करते हैं, जो अब शायद कोविड के बाद से ज़्यादा होम कलेक्शन में कन्वर्ट हो गया, उससे पहले तो शायद इतना था भी नहीं. आई थिंक पीपल यूज टू कम टू द लैब टू गिव देयर सैम्पल, बट आफ्टर कोविड दैट चेंज्ड कम्प्लीटली, राइट? एंड द अदर रोल ऑफ कोर्स इज द टेस्टिंग रोल इन द लैब. बट आई थिंक मैम इन दोनों रोल्स के अलावा और भी बहुत सारे रोल्स हैं जो एक लैब में दैट अ पर्सन कैन एस्पायर टू. Why not? एक तो तुम phlebotomist है, एक junior lab technician, a senior lab technician. We also need people who are computer savvy, Right. To work on the computer, to make some programs, to identify whatever is going wrong. We also need a quality person who monitors exactly क्या reports हो रही हैं, like this quality control and all that. To see that the lab administration also we need another person. Right. So one of the technicians can become a lab administrator later on. Right. They can also become a lab supervisor or a administrator. So two kind of roles at least. Right on the top will be, one is the quality person, right, and one is the administrator, Right. who takes care. Then there can be somebody handling the stores and
the sample collections कैसे हुए, label कैसे हुए, that's one department. Sending The it to the assessing also, that Yeah. all the samples which have come. they have to be, allocated to the various departments. Right. And, exceeding the reports in the end. Finally, there should be somebody who also takes responsibility for the reports coming out and being sent to the appropriate patients, and a feedback person जो call back करके पूछ भी ले सब कुछ ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ, Right. कोई complaint तो नहीं. Right. Ma'am, lot of modern, chains have also got the tele-counseling kind of piece in labs now, which is like where they hire specifically lab technicians. So what is that about, ma'am? So, many of these labs sell health packages. Right. So, उसमें जो भी चीज़ें finally निकलती हैं, let's say you come to a diagnosis, they have a counselor who tells the patient about this and tells them further testing or to see a certain specialist. उसके आगे भी एक step और हो गया है now, which we are, AI aided, the preventive aspect of a disease and the tendency for a disease. आगे के लिए के अगर आपका शुगर पिछले 3 महीने से हाई आ रहा है तो आप इन चीज़ों के लिए प्रोन हो, या आपकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो रही है, सो यू आर लाइकली टू गेट अ हार्ट अटैक. सो ये सब भी हो रहा है आजकल. So उसमें भी मैम काफ़ी नोटिस करा है कि they hire lab technicians also. Absolutely. And I think that is because they have the background of the various tests, etc. Yeah. So उसमें मैम any idea about the kind of salaries, etc. मैम? Good salaries, 30,000 प्लस होती है उसमें, बट तुम्हारे को वो जॉब करने के लिए तुम्हारे को अपनी लैब का बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए, तुम्हारी थ्योरी पार्ट एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज तुम क्लिनिकल में जा रहे हो. Right, absolutely. You should be able to explain to the person. You should be really up and about. Right. And that is another reason why they should have this computer knowledge, The kids should have Absolutely, मैम. एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें ये फीलिंग आती है कि सेल्स प्रोफाइल हो गया है. सो हम अपने स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं कि ये सेल्स नहीं है. दिस इज नॉट एवरीवन कैन डू दिस. दिस इज ओनली certain specialized people who can actually do this. Very true. It's not related to sales at all. It may generate sales. That's a different matter. Right. But this is the most important part, Right. कि मैंने अपना टेस्ट लिया, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं अब क्या करूँ. सबसे important part तो यही है. Right, absolutely. So ma'am, also just wanted to ask you, I know that we have had Virohan students who have come to you for internship, and I'm sure there are other students also who come to you for internship. One, what are your expectations when a student comes to you for internship? And number two, from a student end, ma'am, what do you think they should be expecting? And how should they be evaluating their learning journey during internship? See, when they come to us for the internship, we look for them to be honest, high on integrity. We expect them to be attentive and regular. Okay. After that, because that's when we get interested in training a person. Right. And once a person shows us that they have good communication skills and they are an asset to the they can be an asset to the organization, one would be happy to retain them. Right. For the interns who come, they can evaluate us as per their goals versus our goals. That when they came, they thought end of the session this is what they expected to learn. Of course, they cannot become senior lab technicians and be allowed to operate machines. Right. That's totally out of the way. Right. But if they can do the phlebotomy well, and they can do basic blood testing, like a blood group, and if they can do a stool sample, a urine sample, if they can do their routine and their biochemistry, that's good enough, and that's good enough to help them get a job in any basic lab. Right. Leading up to the next question, ma'am, when you hire somebody, and I expect you hire both freshers and experienced people, what exactly do you look at for ideal employee traits? See, part of it, person comes to us for a job. Right. We look at the general demeanor.
whether they are passionate about their work or not, how attentive they are to details, are they good team workers, commitment, can they do flexible hours of duty, as a phlebotomist, can he drive a motorcycle or what, or are they have a driving license. They have a driving license. Are they open to going to a person's homes to pick up the sample? Because some people may not be conversant with that. Right. And also, sampling should be good. General knowledge about the lab, NABL. If they are senior technicians, of course, NABL and NABL related procedures. How many, So, ma'am, if you were to say you are hiring a fresher, obviously the fresher is coming to you after, say, completing their internship. They haven't, really. In that case, ma'am, what is the kind of knowledge that you look at? The person should be, presentable, should be neat, clean, well-groomed in every aspect, should be a good phlebotomist, because that's the most important part for us. That's the most basic person, and, willing for teamwork, polite. After that, the rest we train. Okay. And in an experienced person, you would be looking at other higher skills. The lab knowledge and other things. Okay, sure. Ma'am, lastly, I would like to ask you that is there any advice that you would like to give a fresh graduate or a diploma holder who has just completed their, technical and hands-on practical journey, their internship? What is it that, you would advise them for the career and future ahead? Samya, like I told you, technicians today, they have a big, role to play. Yeah. And, the role is ever expanding. Indian technicians, the jobs are really open all over the world. People, they are really sought after. Right. So if a technician is good, there is no, it's like the sky is the limit. Right. Saudi mein chale jao, in these Middle Eastern countries, even in the US, they would be happy to take in the Indian technicians. But the technician should have this to be really good at his work and to be dedicated. Whatever work you do it with the best, to the best of your capability. That is really what matters. Oh, right, ma'am. Absolutely. And if you are a cobbler, be the best cobbler. So if you're the phlebotomist, be the best. Best phlebotomist. Absolutely. Absolutely, ma'am. I completely agree with you. And I feel that I'm sure because you have been in the diagnostic space for so long, you have interacted with all kinds of technicians. You would be the best person to tell us that the skills that anyone can actually look forward to grow in life would be the skills of perseverance, sincerity. Absolutely. Without perseverance, sincerity, you're not going anywhere. You're not going anywhere. Absolutely. And on that note, thank you so much, ma'am. It has truly been a pleasure, and we look forward to keep interacting and listening to you for more pearls of wisdom. Thank you so much. Thank you.